सो ये वाली रेसिपी बहुत अच्छी रेसिपी है रमज़ान के लिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे लव टू मेक कटलेट्स इन रमज़ान। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बॉइल्ड फील्ड पोटैटोस लिए हैं, इसको मैंने क्यूब में कट करके बॉईल किया हुआ है। 500 grams potatoes, जिसके अंदर I'm gonna use almost the same quantity, 500 grams of boiled and shredded chicken. इसमें हम वेजीज ऐड कर रहे हैं, a handful of fresh parsley, 2 green chilies, and about half bell pepper, finely chopped. साथ ऐड करेंगे half onion, which is again finely chopped. 1 to 2 tablespoons of onions. 1 to 2 tablespoons of mint. It depends आपको कितना पसंद है mint. So my husband loves it, so I'm gonna add 2 tablespoons of mint. Okay, so now we're gonna start with the masalas. Half teaspoon chaat masala. Okay, so about 15 cutlets we've got from that mix. So दूसरी साइड पे हमने पैन गरम करने के लिए रख दिया। Then आज use the other hand. Oil almost गर्म हो चुका है, so straight away goes that. और क्योंकि रमज़ान है, तो रमज़ान में मेरी फैमिली है विद अबाउट 5 पीपल, सो इसके अगर आप एक टाइम में बनाते भी हैं, 5-6 बना लेते हैं, यू कैन फ्रीज देम फॉर अप टू 2 to 3 days. यू कैन फ्रीज दीज कटलेट्स. आलू सौगे नहीं होंगे, दिल स्टे द सेम एज दे आर. सो द बेस्ट ऑप्शन रमज़ान में यही होती है कि हम चीज़ बनाएं, टाइम बचाएं, एक दफ़ा बनाइए और उसको फिर फ्रीज़ करके रख देते हैं फॉर द बैकअप. So मैं अभी फ्राई करूँगी 3 कटलेट्स. और इसको अगर आपने फ्रीज करना है, इसको आप कोट करें एज इट इज, कोटिंग करके अंडा लगाएं और ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा दें और इसको फ्रीज कर दें. एंड देन स्ट्रेट अवे यू कैन टेक इट आउट फ्रॉम द फ्रीजर एंड फ्राई देम. They'll be ready in minutes. Let's see the beautiful golden color. Look at this. So let it fry. क्योंकि ये अभी fresh बने हैं, they are not gonna take too long to cook. Look at the beautiful color. Let me show you the close-up. These are delicious, definitely. I've tried the filling. These are so good to try. Do not miss these ones. Okay, let them take their time. Now we're gonna dish them out. They're done perfectly. Put them on a towel, kitchen towel, to drain the extra oil from them. Okie dokie. So the kebabs are ready, very well coated, and now I'm gonna put them in the freezer bag, and they can stay in the freezer for like 2 to 3 days. And whenever you need them in Ramadan, you can use them and make a bunch of them whenever you need more.